Good evening, dear students. In our previous lecture, we have discussed some of the things related to slow and fast, that is speed. Okay, and discussing that, I told you about the definition, okay, and about the basic concept of speed like this. Speed, distance over time. Distance traveled by the object with respect to time. Then we have concentrated in some specific cases, okay, like this. Body moving such that traveling equal distances in equal interval of time, okay. That time we got the position vector graph as a straight line inclined to the time axis, and I also told you to calculate the value of speed. Yes, and we have defined the uniform speed also. Okay, now then we have taken non-uniform speed. Non-uniform speed, we have discussed this, that speed is non-uniform when unequal distances are traveled by the body in equal interval of time, and we have taken these examples also. Okay, and then we have plotted the graph, position time graph for the case of non-uniform speed. Okay, and we have observed this particular thing, that the position timeline, this is your timeline, this is your position line, and the line, this plot is the position timeline, and we have observed this particular thing, that position timeline is not a straight line inclined to time axis, in case of non-uniform motion. Okay, then we have started discussion of average speed. Okay, average speed we have defined as as you all know, average we need to calculate. If we feel the requirement of averaging concept, we require when the things are changing. I have given you the example of height of a class, height of all the boys and girls in the class. Okay, suppose someone is asking you, what's the height of your class? Okay, now you must be thinking, okay, the person who is asking, oh, what the person is asking, so, क्या ये सारे persons को देख नहीं पा रहे? हाँ, so many persons are there, but conceptually the person is asking you about the single value of height, that is average height, because everyone in the class is having different height. Okay, so as everyone is having different, so single value when corresponding to a non-uniform variable, okay, is asked, तो averaging होता है. ठीक है, तो non-uniform speed के केस में फाइन, अगर हम सिंगल वैल्यू स्पीड डिफाइन करना चाहते हैं, देन वी डिफाइन दैट स्पीड एज द एवरेज स्पीड. ओके, एंड एवरेज स्पीड, हाउ दैट इज कैलकुलेटेड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम. देन वी हैव टेकन दिस एग्जांपल, ओके, of non-uniform motion. Okay, and in that particular case we have calculated the average speed also. Today we are going ahead with some more cases of average speed, how in different cases average speed will be calculated. Let us see. This situation is given to us. Okay, body going from A to B to C to D. A to B, the body is traveling 10 kilometers in 5 minutes. Then B to C 25 kilometers in 7 minutes and 15 kilometers in 3 minutes. From here to here, the speed is uniform. Here, the speed is uniform. From here to here, the speed is uniform. But if we think complete motion, the motion is non-uniform, the speed is non-uniform. So in this situation, how the average speed will be calculated? See here now. Average speed is equal to
total distance over total time. Now, total distance 10 kilometers, 25 kilometers and 15 kilometers. 10 plus 25 plus 15 kilometers. Time 5 minutes, 7 minutes and 3 minutes. 7, 3, 10, 15 minutes. Now, converting this kilometer into meter and minutes into second and processing. Multiplied by 100, multiplied by 1000 to convert it into meters. Multiplied by 60 to convert it into seconds. Now solving further, we get 55.5 meter per second. This is, average speed from A to D. Now let's take one more situation, okay, when data is provided some other way. Now data is provided this way. From A to B, body is moving with this much speed for 5 minutes. B to C with this much speed for 10 minutes and C to D with this much speed for 3 minutes. Now we are told to calculate average speed from A to D. It may be given A to C. Anything. A to D हमें कहा गया है. Find average speed from A to D. Find करना है. How will be going? Total distance over total time. The same thing. Now, how to calculate total distance? Now, this distance is traveled with 10 meter per second for 5 minutes. Speed is given. Time is given. You have to find distance. Speed multiplied by time will be giving you distance. 10 meter per second. Okay, the speed is in meter per second. तो टाइम आपका सेकेंड्स में होना चाहिए. ओके, तो सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 5 मल्टीप्लाइड बाय 60. ओके, तो सिचुएशन हियर विल बी ओके दैट जनरल लिख लेते हैं. चलो पहले फाइन स्पीड S1 टाइम T1 प्लस सेकेंड सेगमेंट स्पीड S2 टाइम T2 स्पीड S3 multiplied by time T3. Okay, divided by total time T1 plus T2 plus T3. Like this you will be able to find the speed. Okay, now यहां पे एक सिचुएशन और जनरेट हो जाता है. देखो, ठीक है ना. If these time segments are equal, special case, mean this interval are not different, they are same. Okay, mean T1, T2 and T3 they all are T. Okay, if time segments are equal, T1 is equal to T2 is equal to T3 is equal to T, then एवरेज स्पीड के लिए क्या सिचुएशनल चेंज आएगा वो देखो. एवरेज स्पीड कैलकुलेशन के लिए एवरेज स्पीड विल बी S1 T plus S2 T plus S3 T divided by T plus T, that is 3T. T common and we are getting S1 plus S2 plus S3 divided by 3. Mean क्या मतलब है इसका? Mean if the time segments are equal, टाइम सेगमेंट्स आर इक्वल, ठीक है, देन क्या होगा? स्पीड्स लो सारी की सारी और उनका डायरेक्टली मीन निकाल दो. मैथमेटिक्स में मीन मोड निकालते हैं ना, तो मीन निकालना है उसका डायरेक्टली. अगर 10 सेगमेंट है डिवाइड बाय 10 स्पीड, टोटल स्पीड डिवाइडेड बाय 10. अगर 5 सेगमेंट है टोटल स्पीड डिवाइड बाय 5. बट इस सिचुएशन में मेरे पास टाइम सेगमेंट्स बराबर नहीं है. ओके, तो ध्यान रख के चलना है दोनों सिचुएशंस के लिए. फाइन, तो वो तो इसका स्पेशल केस था. तो व्हेनेवर इट विल बी रिक्वायर्ड
तो you directly can use it. Okay, but for this situation I will not be, okay, I can't use this. Fine. Why? Because time segments are not equal. Now applying to it, so average speed from A to D, average speed, total distance, okay, मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम. डिस्टेंस कैसे आएगा? मुझे स्पीड और टाइम गिवन है, तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. 10 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम 5 इंटू 60, ये सेकेंड्स बन गए. प्लस सेकेंड सेगमेंट के लिए स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड, ओके, मल्टीप्लाइड बाय टाइम 10 मिनट्स डिवाइड बाय टोटल टाइम. टोटल टाइम इज 5 मिनट, 10 मिनट एंड 3 मिनट. 5, 10, 3 टोटल हो गई ये 18 मिनट्स. 18 also converted into second. Okay, now solving this we get this final 20.5 meter per second. Okay, तो if the time segments are equal, ठीक है ना, तो कैसे करना है? टाइम सेगमेंट्स आर नॉट इक्वल, तो कैसे करना है? एज आई थिंक आपको पता चल गया होगा. ओके, नाउ लेट्स टेक वन मोर सिचुएशन. लेट डाटा इज गिवन दिस वे नाउ. फ्रॉम ए टू बी 10 किलोमीटर्स अ बॉडी हैज मूव्ड विद 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड. 20 किलोमीटर नेक्स्ट मूव किया 10 मीटर पर सेकेंड से, और 25 किलोमीटर लाइक दिस. ओके, तो दिस इज अ सिचुएशन. ओके, basically distance and times are given. Okay, now I am told to find the average speed. This is the situation. Distance d1 traveled from A to B in time t1, d2 is traveled with t2 and d3 is traveled in time t3. Okay, no, इसको वेरिएट करते हैं, स्पीड देते हैं. ठीक है, स्पीड s1, speed s2 and speed s3. This is the situation. Okay, now how to go? Total distance over total time. Total distance with you is d1 plus d2 plus d3. Total time, distance divided by speed. क्या देगा? टाइम देगा आपको. Distance is d1, okay, speed s1. Distance d2 is moved with speed s2. Distance d3 is moved with speed s3. Okay, तो like this you will be getting, ये total distance हो गया और यहां से आपको total time मिलेगा. Like this you will be able to get average speed. Now applying this particular situation, okay, to given data. This situation. Now average speed. Average speed for the given situation. Total distance over total time. Total distance 10 plus 20 plus 25 kilometers, तो 55,000 मीटर बन गया. ओके, नाउ टाइम फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? डिस्टेंस ओवर स्पीड. स्पीड इज गिवन इन मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस इज गिवन इन किलोमीटर्स, तो आप 10 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे. 10,000 मीटर डिवाइड बाय 5 मीटर पर सेकेंड, लाइक दैट टाइम सेगमेंट आएगा आपका. इसी तरह से तीनों टाइम निकाल के ऐड कर देना है. फाइन बेटा. सॉल्विंग दिस, किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट किया एंड देन दिस इज सॉल्व्ड. वी आर गेटिंग दिस 55,000 over this particular factor. Now solving this, we can get the value of average velocity. 11 meter per second. तो इस तरह से हमारे पास different situations हो सकती हैं to find average speed. तो डरना नहीं है. Okay? Now the next type of speed which we have to study, that is instantaneous speed. Instantaneous speed. Instantaneous, okay, ये बना है instant से. Okay, how we define instantaneous speed? Speed of object
speed of object at particular instant of time. Particular instant of time. अब देखो इंस्टेंट के लिए यहां पे एक प्रॉब्लम आता है. What is that problem? You just concentrate in. Speed is equal to any speed. Okay. Any speed is equal to distance traveled over time interval. Time interval. How we get time interval? Distance traveled we will be getting by the difference of coordinates, and time interval, final instant of time minus initial instant of time. Okay, instant minus instant is giving me time interval. Okay, तो जब मैं यहां पे स्पेसिफिकली बात करूंगा, सपोज यहां पे मैं बात कर रहा हूं x1 कोऑर्डिनेट एट टाइम t1, body is at x2 at time t2. t1 and t2 these are instant. Okay, a particular instant के ऊपर स्पीड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ओके, इट इज नॉट पॉसिबल. फाइन, बिकॉज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर में टाइम इंटरवल चाहिए, एंड टाइम इंटरवल is not instant. That is difference of two instants. Time interval. Have you understood the difference between time and time interval? Okay. So to have, instantaneous speed at some particular instant. Suppose we are saying speed at time t at particular instant. So what we will be doing? We will be, considering infinitely small ahead and infinitely small at later time. Before and after. ठीक, infinitely small before, infinitely small after. Then, using those instants, infinitely small and infinitely before, okay, we will be able to create a difference, that is time interval. Infinitely small, बहुत बड़ा नहीं. Okay, infinitely small. Around this time मैंने infinitely small time before वाला, पहले वाला, और infinitely small time आगे वाला. Okay, फिर ये दोनों इंस्टेंट्स कंसीडर करते हुए मैंने टाइम इंटरवल बना दिया डेल्टा टी. दिस टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज बेसिकली अराउंड दिस इंस्टेंट टी. टाइम infinitely small time interval before and after this instant t. Okay, then how I am taking this to calculate the instantaneous speed? यहां पे assume कर रहा हूं कि in this particular time let the distance traveled is delta x. डेल्टा मतलब small x, delta t small t. Okay, then how I'll write instantaneous speed? That is instantaneous speed is equal to distance traveled delta x time delta t. अब if I am leaving this delta t in a simple like this, ऐसे ही छोड़ दूं इसको, तो कुछ it may be, कोई ये भी सोच सकता है, ठीक है ना, कि ये डेल्टा टी शायद बड़ा हो. ठीक, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देने के लिए यहां लिमिट लिखते हैं इसके साथ में. लिमिट ऑन दिस डेल्टा टी इज कि दिस डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो. मतलब ये जो एनवेलप आपने कंसीडर किया है ना, दिस इज अप्रोचिंग जीरो, वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल. जिस टाइम पे आपको स्पीड निकालना है उस टाइम के बिफोर और आफ्टर इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम कंसीडर करके टाइम इंटरवल बना दो. ओके, और वो टाइम इंटरवल यहां पे लगाना है और टाइम इंटरवल के ऊपर लिमिट लगा दो कि डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो. तो दैट विल बी गिविंग यू इंस्टेंटेनियस स्पीड. होप दिस इज क्लियर. ओके, तो नाउ I have told you, different type of speeds. Okay, in the same way we will be studying about velocities and type of
velocities. Okay, some more things I'll be telling you in the next lectures about speed. Okay, thank you. Have a nice day.